Welcome back, guys. We are going to start our next lecture video on the chapter solution and colligative properties. This is Shyam Khan, and we are going to start our next topic in this chapter, and our topic is colligative properties. So first question which comes in our mind, what is colligative properties? So colligative properties, that is CPs, are those which depend on number of solute particles, right? Number of solute particles. It doesn't depend on the nature of solute. ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ बस ये डिपेंड करेगी किस पे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि हाउ मेनी सॉलिड पार्टिकल्स आर देयर इन अ सॉल्यूशन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी डिपेंड ऑन दैट थिंग. And now why it is called colligative properties, right? Why the name called colligative properties? So it is a Latin word, colligative. Colligative from Latin, that is co means together, or ligar means to bind, right? तो colligative, that is co प्लस ligar मिलके इन्होंने बनाया है टुगेदर टू बाइंड, यानी कि जो एक साथ मिलके सोल्यूशन को बनाता है, ठीक है, टू बाइंड. दैट इज़ योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सिंपली आपकी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंड करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे. इट डजेंट इररिस्पेक्टिव देयर नेचर, उसका नेचर कैसा भी हो, इससे कोई मतलब उसको नहीं है. अगर आप एक सोल्यूशन बनाते हो जिसमें 1 kg आप सुक्रोज ऐड करोगे, और दूसरा सोल्यूशन बनाते हो जिसमें आप 1 kg यूरिया डिपेंड करोगे, यूरिया डिज़ोल्व करोगे, राइट, 1 लीटर में, 1 लीटर वाटर में, तो इन दोनों की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो क्या होंगी, सेम होंगी. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ऑफ, उनका क्या नेचर है इससे उससे कोई मतलब नहीं है, क्या उनका नंबर है इससे मैटर करता है. अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का कम हो जाता है, इसको हमने पहले भी स्टडी किया था. यू मस्ट रिमेंबर व्हेन वी डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन liquid solvent, then vapor pressure of the solvent decreases, right? First. Second one is your depression of freezing point of the solvent. Third one is elevation boiling point of the solvent, and fourth one is osmotic pressure. So we are going to study it every colligative properties individually. First we are going to discuss relative lowering of vapor pressure. So our topic is relative lowering of vapor pressure. Now, as we have already discussed that in a solutions, when solid non-volatile solute is added, then what happened? So there is a one diagram I want to show you, right? This diagram. When in a pure solvent, the number of molecules escaping in the vapor form is more. When you add a non-volatile solute, then solute will occupy the surface like this green bubbles had occupies surface. The number of molecules escaping in the vapor form, their chances are reduced. So number of molecules coming in the vapor forms are reduced. If number of molecules are reduced in vapor form, then what happens? Vapor pressure of the solution will reduce. Here we have already discussed these things before, that in this case vapor pressure is more. Why? Because number of particles in the vapor form is more, and in this case number of particles is less, so vapor pressure is less. Why vapor pressure is less? Because the solid solvent non-volatile solute doesn't come in vapor form, it will occupy the surface of the liquid, and the entry point of the solid molecules will decreases. That's why molecules will decrease and vapor pressure will decrease, right? So here your vapor pressure is only because of your pure solvent. So by applying Raoult's law, we say that
our P1 is equal to P01 and X1. P01 is the vapor pressure of pure solvent, P1 is the partial vapor pressure of the solution, and X1 is the mole fraction of the solvent, right? This thing we have discussed earlier. Now we are going to discuss what is relative lowering of vapor pressure. So this is your known formula. We have talked much about it, which is being derived from the Raoult's law. So by using this formula, we are going to try some other formulas. Let's see. So first we are going to rearrange this formula like P1 by P1 naught is equal to X1. Simply I just took out P1 naught here, so it will come into the denominator form like this. So P1 naught minus 1 is equal to X1 minus 1. Here simply you see I have subtracted minus 1 from both sides, right? So from both sides I have subtracted minus 1, so it will become P1 minus, sorry, 1 will be in the lower, it will become P1 minus P01 by P01. तो P1 by P0, राइट? इस फॉर्मूला में क्या हुआ था, P1 by P0 इज इक्वल टू X1 था हमारा. तो हमने क्या किया, दोनों साइड से -1 किया. जब -1 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 माइनस P101 बाई P01, राइट? क्योंकि माइनस है तो ये P01 जो सिंपल सा एलसीएम वाला रूल है, सब्ट्रैक्शन वाला. और दूसरी साइड में क्या होगा, X1 -1, राइट? ये हो जाएगा. नाउ एज वी नो मोल फ्रैक्शन का जो हमने पढ़ा था, Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1. मोल फ्रैक्शन जब बाइनरी सॉल्यूशंस को होता है तो उस केस में क्या होता है कि दोनों का अगर हम जोड़ दें मोल फ्रैक्शन तो यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है. तो अगर हम X1 को इधर लेकर आएँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम X1 को इस साइड लेके आएँ तो ये क्या हो जाएगा, X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1, राइट? X1 प्लस X2 था, तो X1 को इधर लेकर आएंगे तो ये -1 में जाएगा, तो X2 इक्वल टू -1. तो जो हमारा फार्मूला अभी ड्राइव हो क्या आएगा ओवरऑल, वो क्या आएगा, P1 माइनस P1 नॉट बाई P1 नॉट इज इक्वल टू X2, राइट? तो यहाँ पे जो X1 माइनस 1 था उसको हमने X2 लिख दिया. अब इसको थोड़ा सा और अगर अरेंज करना चाहें तो X2 हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, राइट? ये आपका ओवरऑल आया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. अब जो X2 होता है, अगर हम X2 की बात करें, X2 उसका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि टोटल ओवरऑल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है. तो अब X2 का हम पुट करेंगे अपने फार्मूला में जो हमने अभी ड्राइव किया है, विच इज ड्राइव्ड इट. तो P1 माइनस P1 नॉट बाई P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2, राइट? तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्यूट होता है उसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट? तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बहुत लेस है. यानी कि जो सॉल्वेंट का है वो बहुत ज़्यादा है और जो सॉल्यूट का है वो नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम है. तो हम यहाँ पर N2 जो हमारा है, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपका पॉइंट में आती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होता है. तो ओवरऑल जो फॉर्मूला आएगा P1 माइनस P1 नॉट बाई P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1, राइट? अब ये हमें फॉर्मूला वन थिंग मोर, ये जो मैं ड्राइव करा रहा हूँ, इन केस इफ़ यू फाइंड द फॉर्मूला इन नोट्स और बुक्स इज डिफिकल्ट टू ड्राइव, सो फॉलो दिस थिंग बिकॉज दिस वन इज़ वेरी इजी, राइट? सो N2 बाई N1, N2 बाई N1. Now
What is N2? N2 is weight of solute by number of moles of molar mass of solute, or N1 is weight of solvent by molar mass of solvent, that is M1. So we are going to put this in one combined formula. It will become P1 minus P1 naught by P1 naught, that will equal to weight in gram of solute by M1 into weight of solvent by into M2. It is your, this formula is known as a relative lowering of vapor pressure.